So like SOQL returns as a list of records or list of S objects, Mm-hmm. and list of integer also it returns. Like sir, in method we also mention void. If a method does not returns anything, then we write void. ठीक है. And SOQL also returns as aggregate result. ओके. हिना मैम, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? Yes, sir, not regarding return type, but I'm not sure how many type of return type we use in SQL. ओके. It's four types, sir. ठीक है. सो दे आर फोर टाइप ऑफ रिटर्न टाइप in SOQL query. Means if we are getting the data from database, so where you will store, means which type of variable you will create. Okay, so you can create list of S object, means list of account, list of contact. If you are fetching the record of contact, you will create list of contact. Okay, so list of S object, it's the return type. Second, let's suppose we have 10 account records. So where you will store 10 account records. List of account. List of account. If we have one account record, where you will store one account record. Account object. Okay, we have two options. First, we can use account. Second, we can also use list of account. Okay, Yes, sir. it is possible. We can also store in account also. Okay, so let's suppose you have written query and you are fetching only one record. So where you can store? You can store in, you can say as object, Salesforce object. Okay, third, which return type we have, that is integer. Okay, if you are fetching the record and you are counting only records, how many records you are fetching, that time you will use integer. Okay, next, which we have, that is aggregate result. So we have studied role of summary field in master detail relationship. So in role of summary field, we were, you can say, we were calculating the sum, max, minimum, these value. So we were aggregating the field. Okay, so if you want to aggregate the field, that time you can use aggregate result. You can find sum, okay, sum of amount, sum of fees, sum of salary, like that. Okay, sum, salary, max, minimum, these things you can calculate with the help of aggregate result. Okay, so we have four return type in SQL which we can use. Okay, so all return type we will study one by one. Okay, so list of S object we have completed. Next, when we will use, you can say, when we will use account, you can say S object. Okay, I'm going to create one method, public void, write any name, first method, and here I'm writing public account ACC get set, and here I'm going to use ACC. ACC is equal to select name type industry from account, where name is equal to same point.
Okay, when name is equal to gen point, I want other information of this record. ठीक है, हमें नेम ही पता था चेन पॉइंट, आई वांट टू व्यू complete information of chain point. So what I'm doing, I'm also putting one thing, limit one. Let's suppose if we are getting more than one record, we will face some issue. I have written limit one record will come. Going to save it. So in Visual Force Space, what I'm doing, I'm going to create one button also. Apex space block button. And I'm going to create one command button. Value is display method records action. I am calling first method. Okay, so when user will click on the first method, I want to display some record. So going to create another block. And inside the block, I'm going to display the data. Simple, I'm writing account info. Account name, acc dot name. Okay, so whatever the name are in acc, that name I want to display it. Name type industry. Okay, going to save it. Clicking on preview button. So, okay, how many reports I'm getting? 56. Again, I'm clicking on display method reports. So on click on display method reports, what will happen? Method code will execute, and after that, I'll get in method I've written the query. That query will execute, and I'll get the information. Account name, endpoint, account type, customer channel, account industry, biotechnology. Okay, so where I'm storing the data, I'm storing the data in one S object, that is account, and Y constructor where we are storing the data, list of S object, list of account, Salesforce object, account, Salesforce object. Okay, any doubt here? आगे चलें. Yes, sir. Good. Okay, so we have Sir, I have one question. yes, go ahead. S- Sir, like if we query on limit 1 till Hmm, limit 1, and if we want to fetch only name field, hmm. so can't we store this one on a string variable, No, ma'am. or should we use dot name in the last? We can't store it in string. Whenever you will write the query, बट सर लास्ट में डॉट नेम लगा के तो स्टोर कर सकते हैं ना?
लास्ट में डॉट नेम कहाँ लगाओगे? टेल मी द कंप्लीट स्टेटमेंट। सर यहाँ जो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ एंड हो रहा है, समझा नहीं मैम, भक्ति मैम। सर लाइक जो लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो रहा है, यहाँ पे डॉट नेम लगा के हम उसको किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, यू ओनली कैन से नेम योर को, स्क्रीन। अकाउंट के नेम को या फिर आईडी को डॉट आईडी लगा के, हाँ यहाँ पे डॉट आईडी लिख के। यू कैन शेयर योर यस, और स्क्रीन देन यू ये कैन। सर आप करके देख लो ना इसमें, इसको इसको हटा दो, कोमा को, सेमीकोलन को हटा दो। हाँ, अब जो एसीसी की जगह है यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लगा दो यहाँ पे। सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? एरर आ जाएगी समझ में। हो गया। ठीक है, ये तो जैसे हो हमें इसलिए किसी कह रहा हूँ। हाँ आईडी हाँ। आईडी रुको। चाहिए हो तो। ये मतलब कि व्हाट वी हैव डन अकाउंट एसीसी इक्वल टू। ओके, इट्स अवर द पॉइंट where we are storing the data, we are storing the data in ACC, all the information। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें ACC में से नेम निकालना है। हमने क्या लिखा? ACC डॉट नेम, ACC डॉट टाइप, ACC डॉट इंडस्ट्री। ठीक है। मैम, अकॉर्डिंग टू प्रीति मैम, मैम ने वो स्टेप ये वाला एक स्टेप पहले ही करवा दिया। इफ यू हैव ओनली वन रिकॉर्ड, that time you can use dot notation here, and you can take the value, whatever value you want to take, name, type, industry, and you can store it in, means if it's the name, for getting the string type value, store it in string type of attribute or variable. If you are getting number type, store it in integer. But same things we are doing here। ठीक है। इट सर वाज द ठीक है, बट एडवांस मेरे थिंग। कहने का मतलब हाँ ये हाँ। था कि अगर हम इट इज पॉसिबल, इट्स कि पॉसिबल। पॉसिबल तो है, बट फिर इसको मतलब जैसे रिटर्न टाइप में क्यों नहीं लिया है? जैसे हम इसी में से तो क्वेरी में से ही तो कुछ चीज निकाल के और स्ट्रिंग वेरिएबल में ही तो स्टोर कर रहे हैं। कि स्ट्रिंग क्यों रिटर्न टाइप नहीं आता है? हाँ ठीक है, फिर हम क्वेरी क्वेरी में से नहीं मैम, अब इंडेक्स वाला गेम होएगा ये। डेटा फैच करके लेकर आए, एक डेटा इस इंडेक्स में है। मिश्रा जी, अब आप क्या करने लगे? लेट सपोज वी हैव फैच 5 रिपोर्ट। ओके। कल मैंने जो एग्जांपल दिया था रैपर क्लास वाला, ठीक है, हमारे पास बक्सा है। ठीक है। और बक्सा में हम क्या कर सकते हैं? पैकेट स्टोर कर रखे थे हम। ठीक है। इफ सपोज करो ड्राई फ्रूट मंगाए हैं, बादाम का पैकेट है, काजू का, किशमिश का, मखाने का। ठीक है। अब मैम बोल रही हैं, ठीक है, तो अगर हमें काजू चाहिए, पहले व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द बॉक्स, देन वी विल ओपन द काजू पैकेट, देन वी विल गेट द काजू। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि क्वेरी हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो इंडेक्स में वैल्यू आ रही है, फर्स्ट रिकॉर्ड हेयर है, सेकंड रिकॉर्ड हेयर, थर्ड रिकॉर्ड हेयर। एंड इफ यू आर वी आर यूजिंग डॉट नोटेशन मेथड,
पहले हम क्वेरी के अंदर आ रहे हैं, क्वेरी के अंदर डॉट नोटेशन लगाने के बाद हम इंडेक्स के वैल्यू के अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड की मतलब कि फर्स्ट एक ही रिकॉर्ड फैच किया था, तो हम यहाँ पर आए पहले। फर्स्ट वन रिकॉर्ड, inside it we have the information in we have object type of information, then again we are writing name, कि इसमें से भी हमें नेम वाली ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम फर्स्ट इंडेक्स के अंदर गए हैं। ठीक है मैम, तो वो इनर पार्ट हो गया है। इसको आप कैसे स्टोर करोगे, मीन्स हाउ इट विल कम इन रिटर्न टाइप ऑफ क्वेरी? It's another thing, and after dot name we are here. Okay ma'am. Okay, sir. Okay, so let's suppose if two return type we have discussed. Now next is integer type. Okay, let's suppose you are fetching the record and you want to count how many records you are fetching, and wants to count how many records you are fetching. Okay, so that time you can use one keyword, that is count. Okay, so what I'm doing, I'm going to write the query integer, write any name, total records, then write the query. Select which keyword you have to use. You have to use count. Okay, select count, write any object name from account. And when you will write the count, that time you have to use operand close parenthesis. You have you have not to pass anything here. Okay. So what you will get integer type of value. Here you will get integer type of value. We can write it here also. Instead of here, on record we are displaying it. I'm writing it here. So I'll get all the records of account object, and we are storing in count record, then we are displaying it. Going to save it. Yeah. Now I'm clicking on preview button. So if I'll click on the preview button, I'll get all the records 118. But here, if I'll put limit here, limit 10, okay. So in table, I'll get 10 records, but total records, how many I'm getting? 118. I am fetching all the records of account object. How? With the help of this query, select count from account. ठीक है? Any doubt how we will use count keyword? Okay है ये भी? Yes, sir. Good. Next is aggregate result. Okay, so if you want to find out sum max minimum, okay, sum max minimum, if you want to count the
field in which field values are available, that time you can use aggregate result. Okay, aggregate function you can use it. So I'm going to use it. So go to the query, open query editor, anywhere you can write it, it's up to you. So select, so I want to calculate sum, and in opportunity we have one field that is amount. So I'm gonna write it here. Select sum amount from opportunity. So if I'll click on execute button, I'll get this sum. So all means we have sum of all the records of amount field. Okay, so you can write sum, maximum value you want to find out of the amount, you can write maximum, you can write minimum. Click on execute button. Okay, 15,000. If you want to write all field here, you can write here max amount, some amount. Click on execute button. You will get main max sum. Okay, Sir, how we will use count? and if you want to use count, write the count, and then you have to write the field name. But when you will write the field name, you have to use aggregate result. That time you will not use integer type of return type. Okay, so count name 64. What it will do, if you have entered the value in name field, that time you will get you can say it will come in count. If there is null value, it will not come in count. You can see there are 25 fields in which you have put some value in lead source. Okay, so count field name, it will count. If you have entered the value, it will come in records, else it will not come. Okay, but what will be the return type of this statement? It will be aggregate result. If you will not write anything in parenthesis, that time it is return type, it will be integer. If you will write something, that time you have to write aggregate result. Select read source, select count lead source from opportunity. Okay, so first I'm trying to store it in integer variable. I'll get the error. Illegal assignment from list to integer. We are getting list, so it's a illegal assignment. Now what I'm doing, I'm going to create list of aggregate result, and I'm writing an email. Going to save it. Okay, I'm able to store it, and whatever the value will get, you can debug it. Lead source total records. Sir, I have one question. Can Yeah. you please? Sir, in the 27 line, you are using count. Hmm.
function, in count function, you have passed the lead source. So, Hmm. sir, it's only count the lead source who have a value, or also count who didn't have any value, like null values. Who has a value? If there is some value in lead source, that record it will count. Or null for null. It will not count. If not passing any field value like lead source, if will we pass blank only count function, then it will count null value or not, sir? Like that. Yes, sir. So that time I already told you, if you will not pass any field, that time return type it would be, you can say, Integer. integer. It will count all records. Null values also. भाई फील्ड पास नहीं करी मतलब ये सारे रिकॉर्ड को काउंट करेगा लीड सोर्स कुछ लीड। अच्छा, ओके ओके सर, गॉट इट सर। कंफ्यूजन था इसलिए, गॉट इट सर। थैंक यू। ओके। And if you want to calculate max minimum sum, okay, count. If you want to calculate you can say average, that you can also calculate it, average of any field. Write the field name, which field average you want to calculate, amount, from opportunity. Okay, save it. No error. System.debug, average plus AR. If I'll debug it, what I will get? I'll get some value in AR2 and AR1. So SOQL example controller I dot first method. Okay, so total record 25 in which there is some value in lead source, average. I'm getting the average of amount 2,28,000. Okay, so there are 4 return type in SOQL where you can store the data. List of S object, integer, aggregate result. सेल्स फोर्स का इंटरव्यू होता है उसमें पूछ लिया जाता है डेवलपर के में हाउ मेनी रिटर्न टाइप्स वी कैन यूज इन एसक्यूएल। ठीक है, सभी को समझ में आए चारों रिटर्न टाइप? यस सर। Yes, right. ओके, we don't use aggregate result, we don't use too much aggregate result. Okay, mostly we use list of s object, but for interview purpose we should have we should have an idea of what is aggregate result and other thing. Okay, now I'm going to create one class SOQL example 2. Okay, so I have one list. Okay, I have one list of string, name list.
and in this list we have some value. Okay, so I'm going to assign the value static. If you want to use add method, you can use add method. ठीक है, कोई पूछ रहा था कि कंस्ट्रक्टर से वैल्यू क्यों असाइन नहीं करते, क्या लिमिटेशन है? किसने पूछा था ये वाला सवाल? सर मैंने। मुक्ता, आपने? यस। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये है कि डायनेमिक वैल्यू, इफ आई वांट टू पास डायनेमिक वैल्यू, ओके, आई वांट टू पास डायनेमिक वैल्यू, कैन वी पास इट विद कंस्ट्रक्टर और नॉट? I want to add some dynamic value. Okay, let's suppose I am not sure which name we have to pass, and that name we will get from user. So I will pass by constructor. I will add it. Okay, by constructor we can pass only static data, dynamic data we can't pass. That's why it's not a good approach. Okay, and we will never get static data. Always we will get dynamic data. Data कहीं ना कहीं से आ रहा होगा. Okay, here I am passing static data. So I want, there is some name Jan Khan Pro Sunlight. Okay, and I have stored it in name list. Now what I want, I have three value in a list. I want to fetch complete information of Jan Khan Bipro Sunlight. Okay, so how can we fetch it? How we will do it? तीन रिकॉर्ड हैं, एक से ज्यादा हैं तो लिस्ट क्रिएट कर लो, चलो ठीक है. Then what we will write in query? Hina ma'am, can you tell me what we will write in query? सिंपल क्वेरी कंप्लीट करो पहले. I have to fetch account report only. Can I? Yes, Miss Raj, you can try. Select Select in account as a name, name, company, type या का rating जो. From account where, from from account, account where name in name in colon colon name list. name list. और सही जो from और where है इसको सब break कर दीजिए लाइन को. ठीक है, This डेवलपर is not साहब. good. It's a good way to write a query. Is it correct? Okay, देखो. Yes, जो भी who wants to be a good developer and who want to be good in trigger, ठीक है, जो ट्रिगर में अच्छे होना चाहते हैं, इन कीवर्ड का यूज करना सीख लो. ये वाली लाइन रट सको रट लो, याद कर सको याद कर लो. एसओक्यूएल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. Yes, alert लिए हुए थे. ठीक है, ट्रिगर में इसको यूज, मतलब कि बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं. वी हैव डेटा, ओके, वी आर गेटिंग द डेटा, वी विल स्टोर इन ए लिस्ट, देन वी विल इटरेट इट एंड व्हाटएवर वी विल डू. ठीक है, हमें लिस्ट में डेटा आएगा, वहीं से हम चेक करेंगे कि ये डेटा है या नहीं है. देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज इन. ठीक है, अब कॉलन क्यों यूज किया है यहाँ पे?
ठीक है, आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम हिना मैम। Applex will give. जस्ट अ मिनट मिश्रा जी। मैम आपको Okay, क्लास sir. में Yes, sir. वी हैव टू फैच द डेटा। ठीक है, डेटा फैच करना है अकाउंट में से, और नेम क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए सन लाइफ। उस अकाउंट का नेम सन लाइफ होना चाहिए। कैसे फैच करेंगे? व्हाट विल बी क्वेरी? एक बार क्वेरी देख सकते हैं? यस मैम। अकाउंट में होगा। हम्म। So we will mention name is equal to new name और स्कोप ब्रैकेट के अंदर सन लाइफ डालेंगे। लिस्ट सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट। ये कंडीशन हुई मैम एक। हम्म। कंडीशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स। यूज फेयर क्लोज। वो कंडीशन अलग हुई मैम। दो दो कंफ्यूजन है सब। ठीक है, वेयर। क्वेरी में इफ यू वांट टू राइट द कंडीशन इन क्वेरी, सो वी विल यूज वेयर क्लोज। ओके, सो वेयर नेम इज इक्वल टू सनलाइट। सनलाइट। ठीक है, कोड है करेक्ट। Spelling of from. From ओके, कोड इज करेक्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू पुट कंडीशन इन क्वेरी, वी विल यूज वेयर। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, वी विल चेक बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू और एनी वन। इफ बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, वेयर नेम इज इक्वल टू सनलाइट एंड वट एवर द सेकंड कंडीशन। वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और। ठीक है, अब सनलाइट, ये तो हो गया स्टैटिक टाइप का डेटा। सनलाइट इट इज द स्टैटिक टाइप ऑफ डेटा। लेट्स सपोज वी आर गेटिंग डायनेमिक टाइप ऑफ डेटा, कि कोई एक वेरिएबल है हमारे पास, स्ट्रिंग नेम, एंड इन नेम, ठीक है, नेम में कहीं से वैल्यू आ रही है। कभी यूजर सन लाइफ डाल रहा है, सन लाइफ की इंफॉर्मेशन ले रहा है, कभी ग्रोवियर डाल रहा है, ग्रोवियर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यूजर की तरफ से वैल्यू आ रही है, उस टाइप की डायनेमिक वैल्यू। ठीक है, अब हमें डायनेमिक टाइप की क्वेरी लिखनी है। सो व्हेन यू विल राइट डायनेमिक टाइप ऑफ क्वेरी एंड you will pass the variable name, that time what you will do, you will use call। ठीक है, जो नेम है वो किस में अवेलेबल है? एक वेरिएबल में। जिसका डेटा में सर्च करना है वो वेरिएबल में। ठीक है, चाहे सन लाइफ हो या ग्रोविया हो। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर पुटिंग द वेरिएबल नेम इन क्वेरी। जो भी वेरी ठीक है, वेरिएबल नेम के अंदर नाम है वो क्वेरी में यूज कर रही है। सो व्हेन यू विल यूज द वेरिएबल नेम इन क्वेरी, यू हैव टू यूज कॉलन। सो आई विल राइट कॉलन, नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, ये वेरिएबल नेम है तो कॉलन। अगर वेरिएबल नेम नहीं लिख रहे हो तो कॉलन लिखने की जरूरत नहीं है। सो हेयर आई हैव यूज नेम लिस्ट। नेम लिस्ट इज द वेरिएबल